हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथोलॉजी के यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 28 में ले रहे हैं एफ टेस्ट। व्हाट इज़ एन एफ टेस्ट? एफ टेस्ट इज टू फाइंड आउट वेदर द टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस डिफर सिग्निफिकेंटली। इन दिस केस एफ रेशियो इज। एफ टेस्ट में हम फाइंड आउट करते हैं कि दो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स या सैम्पल्स लिए हमने पॉपुलेशन वेरिएंस, उनकी जो वेरिएंसेस आ रहा है उसमें वो डिफरेंट है सिग्निफिकेंटली या नहीं है डिफरेंस। तो एफ रेशियो का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू सिग्मा वन स्क्वेयर अपॉन सिग्मा टू स्क्वेयर। सिग्मा वन सिग्मा टू आर वेरिएंसेस ऑफ पॉपुलेशन। सिग्मा स्क्वेयर इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वेयर अपॉन एन, where x observation, mu mean of the observation and number of observation. Or to find out whether the two samples drawn from the normal population having the same variance, in this case f ratio is f equals to s1 square upon s2 square. तो ये पता लगाते हैं दो सैंपल जो ड्रॉ किए गए हैं नॉर्मल पॉपुलेशन में से उनका सेम वेरिएंस है या नहीं है। पहले वाले में हमने दो डिफरेंट सैंपल लिए थे और इसमें हमने एक ही सैंपल लिया है, दो सैंपल लिए हैं और एक नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए हैं। उसमें हम डिफरेंट पॉपुलेशन से लिए थे दो सैंपल्स और इसमें एक ही पॉपुलेशन से लिए हैं। तो इन बोथ द केसेस सिग्मा वन स्क्वेयर ग्रेटर देन सिग्मा टू स्क्वेयर और एस वन स्क्वेयर ग्रेटर देन एस टू स्क्वेयर। इन अदर वर्ड्स, लार्जर एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएंस ऑलवेज बी इन न्यूमरेटर, स्मॉलर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस इन डिनोमिनेटर। Degree of freedom of larger variance n1 minus 1 or df of smaller variance n2 minus 1. What is F statistics? F statistics, also known as F value, is used to ANOVA and regression analysis to identify the means between two populations are significantly different or not. तो जो एफ स्टैटिक होती है वो एफ वैल्यू किसे हम कहते हैं, अनोवा में यूज़ किया जाता है और रिग्रेशन एनालिसिस में जिसका यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कि मीन्स बिटवीन टू पॉपुलेशन। तो मीन्स हमने लिए हैं दो पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंट है या नहीं। इन अदर वर्ड, एफ स्टैटिक्स इज रेशियो ऑफ टू वेरिएंसेस। यह कह सकते हैं जो एफ स्टैटिक है वो रेशियो है टू वेरिएंसेस का। वेरिएंस इज नथिंग बट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इट टेल्स हाउ फॉर द डाटा इज डिस्पर्स फ्रॉम द मीन्स से जो डेटा है कितना डिफर आ रहा है। एफ स्टैटिक्स अकाउंट्स करस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन वेरिएंस। F statistics is almost similar to T statistics. T test states a single variable is statistically significant or not, whereas F test states a group of variables are statistically significant or not. F statistics are based on ratio of mean square. F statistic is the ratio of mean square for treatment or between group with the mean square for error or within groups. So F equals to ms between upon ms within. So right tailed HA is sigma 1 square greater than sigma 2 square or rejection region F greater than equals to F alpha. Left tailed HA sigma 1 square less than sigma 2 square, F less than equals to F 1 minus alpha. Two tailed HA sigma 1 square not equals to sigma 2 square, F less than equals to 1 minus alpha 2 or F greater than F alpha by 2. If calculated F value is greater than the appropriate value of F critical value find in the table or provided in software, then the null hypothesis can be rejected. The calculated F statistics for a known source of variation is found by dividing the mean square of the known source of variation by the mean square of the unknown source of variation. When would you use an F test? F test को कब यूज़ करना है? There are different types of F test are exist for different purposes. In statistics, an F test of equality of variance is a test for the null hypothesis that two normal populations have the same variances. F test is to test equality of several means, while ANOVA used to test the equality of means. F test for linear regression model is to test any of the independent variable in a multiple linear regression are significant or not. It also indicates the linear relationship between dependent variable and at least one of the independent variable. इस तरह से तीन तरह के टेस्ट ऐप में यूज़ किए जाते हैं। एक तो होता है इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस का होता है, दूसरा होता है इक्वलिटी ऑफ सेवरल मीन्स का होता है जो
अनोवा होता है इक्वलिटी ऑफ मीन्स का, और लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है तीसरा। स्टेप टू कंडक्ट एप टेस्ट, कौन कौन से स्टेप यूज़ किए जाते हैं एप टेस्ट के लिए? चूज द टेस्ट, नोट डाउन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड ऑल्सो एज्यूम द सैंपल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यह हमें याद रखने हैं कि जब भी हम करते हैं कि कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके अलावा सैंपल्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं या नहीं। कैलकुलेट द एप स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद हम एप स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। चूज द हाईएस्ट वेरिएंस इन द न्यूमरेटर एंड लोएस्ट वेरिएंस इन द डिनोमिनेटर विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। डिटरमाइन द स्टैटिक हाइपोथेसिस, इसके बाद हाइपोथेसिस लिखते हैं। स्टेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखते हैं। कंप्यूट द क्रिटिकल एप वैल्यू, एफ टेबल से निकालते हैं। यूज अल्फा बाई 2 फॉर टू टेल टेस्ट तो अल्फा बाई 2 यूज़ करते हैं। कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिक्स, इसके बाद टेस्ट स्टैटिक्स निकालते हैं। फाइनली ड्रॉ द स्टैटिकल कंक्लूजन, और फाइनल में हम स्टैटिकल कंक्लूजन निकालते हैं। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, यदि your टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो क्रिटिकल रीजन के अंदर आती है। एग्जाम्पल ऑफ एन ऐप टेस्ट इन DMAIC. In major analysis plays of DMAIC, app tests find out whether the two independent estimates of population variance differ significantly, or to find out whether the two samples drawn from the normal population having the same variance. Hypothesis testing. A tailed hypothesis is an assumption about a population parameter. The assumption may or may not be true. One-tailed hypothesis is a test of hypothesis where the area of rejection is only in one direction, whereas the two-tailed the area of the rejection in two direction. The selection of one and two-tailed tests depend upon the problem. In F sampling distribution, F is calculated by dividing a variance of one sample by the other sample's variance. For the right-tailed test and two-tailed test, make sure to keep the highest variance as the numerator and lowest variance as the denominator. So the numerator degrees of freedom is the degree of freedom for the sample with highest variance. The degree of freedom for the denominator is the degree of freedom for the sample with the lowest variance. So right-tailed and two-tailed, F equals to S1 square upon S2 square. Degree of freedom sample with the highest variance or degree of freedom sample with lowest variance. Whereas for the left-tailed test, keep the lowest variance as the numerator and highest variance as the denominator. So the numerator degree of freedom is the degree of freedom for the sample with the lowest variance. The degree of freedom for the denominator is the degree of freedom for the sample with the highest variance. So left-tailed F equals to S1 square upon S2 square. Degree of freedom sample with lowest variance and degree of freedom sample with highest variance. Now we will come to right-tailed test क्या होता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका। A botanical research team wants to study the growth of the plants with the uses of urea. Team conducted 8 tests with the variance of 600 during initial stage, and after 6 months, 6 tests were conducted with a variance of 400. The purpose of experiment is to know is there any improvement in plant growth after 6 months at 95% confidence level. बॉटनिकल रिसर्च में एक स्टडी में करना चाहती है एक टीम, जिसके लिए प्लांट्स की ग्रोथ को देखा जा रहा है उनकी यूजेज ऑफ एरिया के यूज़ करने से। इसने 8 टेस्ट कंडक्ट किया, जो वेरिएंस था वो 600 का था इनिशियल स्टेज में, और आफ्टर 6 मंथ 6 टेस्ट पर कंडक्ट और 6 टेस्ट और कंडक्ट किए गए विद द वेरिएंस ऑफ 400 वेरिएंस के साथ। पर्पज ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू नो देयर इज इम्प्रूवमेंट टू प्लांट ग्रोथ आफ्टर 6 मंथ ऑफ 95% कॉन्फिडेंस लेवल। इसका पर्पज़ ये था जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिससे इम्प्रूवमेंट हो प्लांट की ग्रोथ में 6 मंथ में 95% कॉन्फिडेंस लेवल। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें है 8-1 यानी 7 है, यानी हाईएस्ट वेरिएंस न्यूमरेटर है। V2 है 6-1 इक्वल्स टू 5। हिस्टोरिकल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस H0 है σ12 लेस देन इक्वल्स टू σ22। अल्टरनेट हाइपोथेसिस है H1 σ12 ग्रेटर देन σ22। Since the team wants to see improvement in one-tailed right-tailed, level of significance alpha equals to 0.05. इसमें ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है, इसमें ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम था उसकी वैल्यूज़ हैं, नीचे लोएस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़ हैं। जहाँ पे दोनों कट करेंगे वो आ जाएगा वैल्यू, आपके एफ टेस्ट की वैल्यू आ जाएगी जो हम निकालेंगे।
कंप्यूट द क्रिटिकल एफ फ्रॉम टेबल 4.88 आ रहा है जैसे इसमें. रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ द कैलकुलेटेड एफ वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 4.8. तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज एफ वैल्यू मोर है इक्वल है 4.88 के. कैलकुलेट द एफ वैल्यू एफ एस वन स्क्वायर अपन एस टू स्क्वायर 600 अपन 400 1.5. तो एफ कैलकुलेटेड लेस देन एफ क्रिटिकल हेंस फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. नल रिजेक्ट हो जाता है. ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग टेबल दी गई है इसमें. नाउ द व्हाट इज द पी वैल्यू. From F table we can find F critical values that gives us a certain area of the right. From the above table, the area to the right of 4.8 is 0.05 and area to the right of the 3.37 is 0.100. So the area to the right of 1.5 from the graph must be more than 0.100, but we can find exact p value using any statistical tool or Excel very easily. This is the graph. Area right of this line 0.338 or right of this line 0.1. Area of right of this line 0.05. This पे दिखाया गया है. Interpret the result. Compare F calculate and F critical in hypothesis testing. Critical value is point on the test distribution. Compare the test statistics to determine whether to reject the null hypothesis. Since F calculate value is less than the F critical value, it is not in the rejection region, hence the fail to reject the null hypothesis at 95% confidence level. Now the two-tailed test. A toy manufacturer is planning to place a bulk order for batteries for the toys. The right quality team collected 21 samples from suppliers A and the variance is 36 hours. Also collected 16 samples from supplier B with a variance of 28. At 95% confidence level, determine is there a difference in variance between two suppliers. इसमें टॉय मैन्युफैक्चरर है जो प्लानिंग करता है एक बुल्क में प्लेस करने की बैटरीज को टॉयस की, जिसमें क्वालिटी टीम ने कलेक्ट किए 21 सैंपल्स सप्लायर से ए से और वेरिएंस 36 आवर्स का है इसमें, और 16 सैंपल्स कलेक्ट किए बी से जिसका वेरिएंस 28 है. तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे डिटरमाइन करना है कि डिफरेंस जो वेरिएंस है वो टू सप्लायर से ये सिग्निफिकेंट है. सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम 21 - 120 हो गया क्योंकि 21 सैंपल था फर्स्ट वाला. सैंपल साइज दूसरा 16 था 60 - 1 एंड डिग्री ऑफ सैंपल ड्यूटी हो गया 15. स्टैटिकल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस H0 sigma 1 square equals to sigma 2 square. Alternate hypothesis H1 sigma 1 square not equals to sigma 2 square. Since team wants to see if there is a difference between the two suppliers, is it a two-tailed test or level of significance alpha equals to 0.05, alpha 2 0.025. Critical value for the right tails have 0.025, 20, 15 equals to 2.7559. Critical value of the left tail. Since it is a left tail, we must switch the degree of freedom there, then take a reciprocal of final answer. It is the F test value. Reciprocal of F 0.025, 15, 20 equals to 1 upon F 0.025, 15, 20 equals to 1 upon 257 equals to 0.389. Calculate the F value. F equals to S1 square upon S2 square 36 upon 28 1.285. Interpret the result. Compare the F calculate to F critical in hypothesis testing. A critical value is a point on the test distribution compares to the test statistic to determine whether to reject the null hypothesis. Since F calculate value does lie not in the rejection area, hence we fail to reject the null hypothesis at 95% confidence level. Now the formula for F test to compare two variances. In statistical F test using an F substitute to compare two variances sigma 1 and sigma 2 by dividing them. The result will always be a positive number because variances are always positive. Thus, the equation for comparing two variances with the F test is F value equals to variance 1 upon variance 2. F value equals to sigma 1 upon sigma 2 1 upon sigma 2. To compare the variances of two different sets of value, the F test formula is used. Applied on F distribution under the null hypothesis, first we have to compute the mean of two given observation and after calculating their variance. Sigma square equals to summation x minus x square upon n minus 1. Sigma
square equals to variance x, value given in a set of data, x for mean of the data and the total number of values. We always test the population variance are equal while running an F test. In other words, we always assume the variances are equals to 1. Thus, our null hypothesis will always be that the variances are equal. Question 1. Conduct an F test on the following samples. Sample 1 having variance 109.63, sample size 41. Sample 2 having variance 65.99, sample size 21. Solution. Step 1. First, we write the hypothesis statement as has no difference in variances, has a difference in variances. Step 2. Calculate the critical value. Here, take the highest variance as the numerator and lowest variance is the denominator. So step 2, calculate the F critical value. We take the highest variance as the numerator and the lowest variance as the denominator. F value sigma 1 square upon sigma 2 square. So we get 1.66. Step 3, calculate the degree of freedom as. The degree of freedom in the table will be a sample size minus 1. And the sample 1 it is the 40 and so for sample 2 it is 20. Step number 4, choose the alpha level. As no alpha level was given in the question, so we may use the standard level of 0.05. This need to behave for the test and we use 0.025. Step 5, we will find the critical F value using the F table. We will use the table with 0.025 critical F for 20, 40, 20 at alpha. 0.025 is 2.287. Step 6, compare the calculated value to the standard table value. If our calculated value is higher than the table value, then we may reject the null hypothesis here. 1.66 less than 2.87, 2.287, so we cannot reject the null hypothesis. Relevance and use of F test formula. F test as discussed above help us to check the equality of the two population variances. So when we have two dependent samples which are drawn from a normal population and we wants to check whether or not they have the same variability, we use F test. F test also has great relevance in regression analysis or also for testing the significance of R square. So in a nutshell, F test is very important tool in statistics. We want to compare the variance of two or more data sets, but we should keep all the assumptions in mind before performing this test. Also given an example, a statistician was carrying out F test. He got the F statistic as 2.38. The degree of freedom obtained by him 8 and 3. Find out the F value from the F table, determine whether we can reject the null hypothesis at 5% level of significance. One tail test है ये. We have to look for 8 and 3 degree of freedom in the F table. F critical value obtained from the table is 8.845. Since the F is 2.3 is lesser than the F table value 8.845, we cannot reject the null hypothesis. Next example number 2. An insurance company sells health insurance and motor insurance policies. Premiums are paid by customers for these policies. The CEO of insurance company wonders if premium paid by either of insurance segment, health insurance and motor insurance, are more variable as compared to another. He finds the following data for premium paid. Health insurance variance is $200, motor insurance $50, sample size 11 and for health insurance and 51 for motor insurance. Conduct a two-tailed F test with a level of significance of 10%. Step 1, null hypothesis H naught sigma 1 square not equals sigma 1 square equals to sigma 2 square. Alternate hypothesis H a sigma 1 square not equals to sigma 2 square. Step 2, F statistics F value of sigma 1 square upon sigma 2 square 200 upon 54. Step 3, df1 degree of freedom n1 minus 1 11 minus 1 equals to 10. Degree of freedom for two samples n2 minus 1 51 minus 1 equals to 50. Step number 3, since it is a two-tailed test, alpha level 0.10 upon 2 0.050, the F value from the F table with degree of freedom as 10 and 50 is 2.026. Step 5, since F statistics 4 is more than the table value obtained 2.026, we reject the null hypothesis. Next example number 3. The bank has a head office in Delhi and branch at Mumbai. There are long customer queues at one office while customer queues are short
at the other office. The operation manager of the bank wonders if the customers at one branch is more variable than the number of customers at another branch. A research study of customers is carried out by him. The variance of Delhi head office customer is 31 and that of the Mumbai branch is 20. The sample size of the Delhi head office is 11 and that of the Mumbai branch is 21. Carry out a two-tailed lab test with a level of significance of 10%. Step 1, null hypothesis as not sigma 1 square equals to sigma 2 square. Alternate hypothesis H is sigma 1 square not equals to sigma 2 square. Step 2, F statistics F value sigma 1 square upon sigma 2 square equals to 31 upon 20 equals to 1.55. Step 3, degree of freedom for first sample n1 minus 1 11.1 11 minus 1 equals to 10. Degree of freedom for second sample n2 minus 1 equals to 21 minus 1 equals to 20. Step 4, since it is a two-tailed test, alpha level 0.10 upon 2 0.05, the F value from the F table with the degree of freedom as 10 and 20 is 2.348. Step 5, since F statistic 1.55 lesser than the table value obtained 2.348, we cannot reject the null hypothesis. It is the F test completed. So by F test we compared two different samples using F test. Thanks a lot.